कैसे मिथोलॉजी हो सकते? हम इधर वृंदावन में हैं। वृंदावन में जमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, नंदीश्वर है, बरसाना है, हर एक जगह इधर है। तो कैसे मिथोलॉजी हो सकते? The Lord Ram came as a person to this earth. The Dash Avatar, they came as persons. Ye yatamam prapadyante tam sitaiva bhajam yaham. As I approach Krishna, he reciprocates accordingly. We have to take the first step. That this was a bona fide religion, so any logical man would accept this and hopefully practice it. I was traveling many places. You cannot compare anything to India, anything. Most of the Western world is Christianity doesn't really answer those questions. So when I met devotees, we discussed Bhagavad Gita, I immediately was interested, and this is the book that answers these questions. दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था पब्लिक ओपिनियन ऑन सनातन धर्म, जिसमें हमने दिखाया था कि इंडियन यूथ जो है वो सनातन धर्म को लेकर क्या सोचता है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं कि व्हाट वेस्टर्नर्स थिंक अबाउट सनातन धर्म। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे आज के इस वीडियो में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। हमारे देश के जो युवा हैं, भारतीय जो युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। उनका ऐसा मानना होता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब एक तरीके से माइथोलॉजिकल हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। उनको लगता है भगवद गीता जो है एक माइथोलॉजी है। तो आपने कैसे विश्वास किया? बिकॉज आप अमेरिका से हैं, वहाँ पर कृष्ण और राम जब आप अपने यूथ में होंगे तो वहाँ कोई नाम नहीं होगा। तो आपने कैसे विश्वास किया कि नहीं, भगवान कृष्ण वास्तविकता में है, भगवद गीता वास्तविकता में है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं, कोई फिक्शन नहीं है? तो आपको कैसे ये विश्वास आया? मतलब कैसे मिथोलॉजी हो सकते? हम इधर वृंदावन में हैं। वृंदावन में जमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, नंदीश्वर है, बरसाना है, हर एक जगह इधर है। तो कैसे मिथोलॉजी हो सकते? क्योंकि सब कुछ साक्षात हमारे सामने है। और ये कृष्ण लीला का स्थान है। अगर आप चित्रकूट जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, नासिक जाएंगे, ये सब राम के स्थान है। तो इनका लीला सब उधर है। अगर उधर जाएंगे, सेतु बंधन जाएंगे तो वहाँ है सेतु। श्रीलंका भी उधर है। तो वो अगर लोग कहते कि माइथोलॉजी है, कैसे माइथोलॉजी हो सकते? सब कुछ इधर ही है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपको विश्वास है कि माता जी, मतलब ये फैक्ट है। और जी, तो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। अगर हमारे सामने सब जगह है तो कैसे मिथोलॉजी हो सकते? The Bhagavad Gita is authentic, bona fide scripture, and it's true, 100% true. How you get conviction? It's a common sense. You need a little common sense. Just open Bhagavad Gita and read a few verses, and you tell me, is there any human in the world who can understand or say these things? It's unbelievable. Yes. I just opened second chapter Bible at the very beginning. Krishna explains how the mind works, how the nature works. No one knows these things. Yeah. It's not written by ordinary human. Yes. Therefore, this is special. I was studying philosophy. I read all the philosophy: German, French, Western, Egypt, Middle East. They come to some point. Bible, of course, we're brought up in the church, singing in the church, but no knowledge. Who is God? Nobody knows. Who he said, what he says, we don't know. We just guess. What is good? We guess. What is good for us? It's not good for others, but that's okay. This is all good. So only if somebody opens Bhagavad Gita and reads some of the verses on purpose, you understand this is only God can speak that. It's not written by any other. Most of the intelligent people and scientists and scholars in the West, philosophers, they admire Bhagavad Gita. Yeah. All of them. Yes. Somebody has to just read the reviews of that. Yes. When you hear first time about Krishna and Lord Ramchandra and Balaramji and all the pastime given in the Bhagavatam and Ramayana, so how you put faith that, okay, these are the solid faith, these pastime are really happen? Well, one very helpful thing is to keep away from YouTube. Keep away from YouTube, turn off your computer. Because all these things are completely designed to erode our faith in Vedic culture. The more in touch we are with Western culture, the less respect and faith we have in Vedic culture. Similarly, if we keep away from Doordarshan, YouTube, and all these other things, then we can see, what Krishna consciousness is, and we can see the actual tangible effect it can have on our life.
So any logical man would accept this and hopefully practice it. If you cannot see, that doesn't mean it does not exist. It's like the air. You cannot see the air, but can you doubt that the air is here? No, you cannot. Like, you breathe the air is here. So you just have to just be broad-minded. So like somehow or other, just by some fortune, I was interested in these topics, and I always knew that there's something more than beneath the eye, like the eye can see. What do you think, Broji? What is the reason that India in 2020 is not accepting this Bhagavad Dharma, Sanatam Dharma? Prabhupada answered that question very nicely. He says there's two kinds of crows, the new crows and the old crows. The old crows have been eating the garbage for so long, they're no longer interested. They're flying away looking for something else. The new crows are thinking, oh, some nice garbage here. They fly in, they want to enjoy. So the Westerners, we've been eating the garbage for so long. We're the old crows, we're looking for something better. But the Indians, they're thinking that garbage is something wonderful. They're new crows, they're flying in for pound and dollar to enjoy the garbage. So basically that's it. So, what special you see in Bhagavad Gita and this Sanatan Dharma that you start following it and you start practicing it? Actually, I was interested to know who is God, what is the personality of God, since very, very early in childhood. And I was born to a very religious family in my country, Yahudi family. Jahud family. Yahudi, yeah. So, first time I was asking my teacher, and we was learning some. He was teaching some, Jewish scriptures. It's called Gemara. But I was asking my teacher every morning. We are asking a favor from God, asking His blessings. You can describe a little bit more. You can give me more details about God. How He looks like, where He's residing, what is His activities. And the teacher becomes so angry at me. He was telling me, listen, we are not speaking about this subject matter in this class. And the whole class, it was when I was 12 years old. So the whole class was mocking at me almost one year. Because Yahudis are impersonalists. They doesn't appreciate the form of God, doesn't appreciate the Leela of God, doesn't appreciate the whole idea that God is a person. So when you read Bhagavad Gita, then you get all the answers of your question and... Yeah, of course. There is no doubt about that, yeah. Bhagavad Gita is explaining very scientifically about the whole situation. You see, this influence Bollywood, Maya, America. So the Indian, they losing the culture. Yes. They try to follow America. Yeah. Everybody wear jeans. Maybe very soon the Hindu will eat cows and everything. Yeah. And they all got spoiled. Bad karma, very bad karma. Yeah. So our mission as a preacher of the international society for Krishna consciousness is to help the human beings recover the original religion of the soul, which is Sanatam Dharm. कई बार लोग ऐसा भी पूछते हैं कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे शास्त्र हैं और भी कई रिलीजियस बुक्स हैं, तो लोग आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवत गीता के थ्रू ही मतलब लोगों का परिवर्तन किया जा सकता है और श्रीमद् भागवतम ये भागवत धर्म है, इसका ही प्रचार प्रसार क्यों? बाकी शास्त्र, बाकी और भी जितने शास्त्र हैं बाकी दूसरे धर्मों के, तो आपने उनको क्यों नेगलेक्ट किया? क्योंकि अमेरिका में उस समय 1960s में धर्म ये था कि क्रिश्चियन धर्म था, जूश धर्म भी था, कि वो दो धर्म सबसे प्रसिद्ध था। तो मैं बाइबल पढ़ती थी और मैं खूब स्टडी किया। उसमें भगवान के धर्म है, नियम भी है। मैं उस नियम भी पालन किया और उससे मेरा जीवन थोड़ा पवित्र हो गया। तो उसके मतलब है हर एक शास्त्र में आप भगवान के धर्म मान सकते, लेकिन और कोई दूसरा शास्त्र में
भगवान के वाणी नहीं है, कि वो भगवद गीता में समझ गया। तो अगर भगवान खुद बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो क्यों हम नहीं मानेंगे? भगवान एक है हर एक शास्त्र में, कि वो एक भगवान है। तो अगर वो साक्षात बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, तो क्यों हम नहीं मानेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मैं भगवद गीता को पूरा स्टडी किया और बहुत अच्छा लगती हूँ। We talk to many youths of the India, and when we say them, okay, read Bhagavad Gita, they say, okay, this is all these things are mythology. We doesn't put faith in Krishna, but we are seeing that the many devotees are coming from West and they are dedicating their life, they are preaching. So how you get faith that no, there is existence of Krishna, there is Radharani, there is Lord Ramchandra. This Bhagavad Gita is not mythology. How you get this conviction? Okay, very good question. I'm going to give an analogy to make it clear. Sometimes a young man wants to get married and he sees there's some qualified, beautiful young ladies. But the young ladies may not be interested in him. And when the approach is made about marriage, they say, no, I'm not interested. So there's nothing he can do to make someone interested if they're not interested. They have to know each other. Well, you have to have the qualities that will attract that young lady to say, yes, now I'm interested. Yes. It's the same with Krishna. Krishna may not be interested in having a relationship with you because you don't have the qualities he's looking for. Yes. The qualities he's looking for is humility, kindness, gentleness, sweet speech, helping others, all these qualities. Then he reveals himself to you. And if Krishna doesn't reveal himself to you, you'll think everything is mythology. Just like if the young lady doesn't want to become your wife, you won't know anything about her and she won't reveal herself to you. It's so simple. We have to take the first step to Krishna, then he reciprocates. Ye yatamam prapadyante tam sitaiva bhajamyaham. As I approach Krishna, he reciprocates accordingly. We have to take the first step. If I'm thinking Krishna has to take the first step, that's crazy. That's crazy, yeah. Yeah. If I want to meet Boris Johnson, Prime Minister of London, I have to take first step. He's not going to take first step to me. Trump is not going to take first step to me. So what to speak of Krishna? So to get that personal feeling of Krishna as a person, he spoke the Bhagavad Gita. Lord Ram came as a person to this earth. The Dasavatar, they came as persons. In order to really understand personally, one has to serve. Krishna says in Bhagavad Gita, only by devotional service can I be understood as I am. And we see even on the battlefield of Kurukshetra, Arjuna understood that Krishna was the Supreme Personality of Godhead. But look at Duryodhana and all of his family members. They didn't understand. Otherwise, why would they be trying to kill him? And Shishupal, you know, here's Krishna's giving Shishupal's mother, right? I will give him 100 chances of offending me. So in order for one to really understand these pastimes, you have to hear Shravanam. You have to hear about Krishna from the bona fide spiritual master, which is Srila Prabhupada. He's our Acharya. We saw by his life. If you don't have connection with Krishna, this means you never be happy. Krishna is always here. He's our eternal friend in our heart. He never left us. It's us. When we suffer, it's because we forget Krishna. Our source of suffering is to forget Krishna. Bhagavad Gita changed my life. I want to say, chant and be happy. हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। दोस्तों,
आपको याद होगा दोस्तों कि भी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से इंडियन यूथ और इंडियन पब्लिक का वैदिक कल्चर को लेकर जो अवेयरनेस का लेवल है किस प्रकार से थोड़ा कम होता जा रहा है। वही दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपको दिखाया कि जो लोग बाहर के लोग हैं, जो लोग वेस्ट के लोग हैं, जो लोग पाश्चात्य जगत के लोग हैं, वो ना सिर्फ भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार भी रहे हैं, बल्कि इसकी भगवद गीता का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि भगवद गीता को, सनातन संस्कृति को प्रिजर्व किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ दोस्तों इसको शेयर करने की भी आवश्यकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी आवश्यकता है। डिस्ट्रीब्यूट करने से दोस्तों याद आया कि ये जो महीना है, इस महीने को हम गीता जयंती मनाते हैं दोस्तों, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का नॉलेज शेयर किया था। इसीलिए दोस्तों हमारी शिक्षार्थकम की पूरी टीम ने इस महीने में कम से कम 1 लाख भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करने वाली है। हमने एक संकल्प लिया, हमने एक टारगेट लिया दोस्तों कि हम 1 लाख भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर नए व्यक्ति के पास हम भगवद गीता को देखना चाहते हैं, हर घर में एक भगवद गीता को देखना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा प्रयास है। इस बड़े से टारगेट को पूरा करने के लिए हम अपने सभी दर्शकों का सहयोग चाहते हैं, आप सभी लोग का आशीर्वाद चाहते हैं। हम आपसे ये चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर, सारे रिलेटिव, सभी आस पड़ोस के लोग, सारे आपके एम्प्लॉयज़ हों, आप सबके पास एक एक भगवद गीता सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक गूगल फॉर्म है, जहां जाकर आप अपना नाम, अपना पता, अपना टेलीफोन नंबर हमें दे सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको भगवद गीता यहां से स्पीड पोस्ट कर सकती है, आपको भेज सकती है। आपसे भी निवेदन है दोस्तों कि आपको पता है कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, काफ़ी टाइम और एनर्जी देना पड़ता है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करिए, ताकि हम अगली वीडियो भी जल्दी से जल्दी बना सकें और इसी प्रकार से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचार और प्रसार कर सकें। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम डेली भगवद गीता से रिलेटेड वीडियोज़ उसमें हम बना कर डालते रहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।